बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के ऊपर लाइव। मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक। और प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक आप मेरे साथ होते हैं एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे को। होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। और टुडे इज़ अ रेनिंग डे। होप वेर एवर यू आर सेफ। ड्राइव केयरफुली बिकॉज लॉट ऑफ रेन गोइंग ऑन। वेदर इज़ बिकमिंग कोल्ड, तो अपना ख्याल रखें। वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न आप सारे आईपी चैनल्स पे देखते हैं, फेसबुक पे लाइव हैं, यूट्यूब पे लाइव हैं। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हमेशा हमारे स्क्रीन पे रहते हैं। दैट इज़ 9056704114। और सोशल मीडिया हैंडल है हमारा @voiceoftoronto.tv। अगर आप अपने कुछ सेंटिमेंट्स हमारे साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, अपना फीडबैक देना चाहते हैं प्रोग्राम के हवाले से, तो voiceoftoronto.tv@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिज़नेस को हम दूर दूर तक, जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है वहाँ तक उसको पहुँचाएँ और लोग आपको देखें, लोग आपसे बात करें, आपके बिज़नेस के बारे में जानें, तो आप हमारे votmedia.ca हमारा जो वेबसाइट है www.votmedia.ca पे जाइए। वहाँ पर हमारे पास सारे स्मॉल बिजनेसेस के बड़े अफोर्डेबल पैकेजेस हैं। उसको आप वहाँ से देख के आप गिव अस अ कॉल after the program, and I can assure you कि we will try to help you with you getting started with your business। अगर आप entrepreneur हैं, किसी भी तरह का आप artist हैं, whatever you are in this country, and if you need some sort of a push to you know promote your businesses, then Voice of Toronto Television is there for you and will be able to help you out। आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा सा इस ऑन अ लाइटर नोट, बट इम्पोर्टेंटली ये कि आज हमारे शहर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूबी सोहोता उन्होंने एक राउंड टेबल मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। एंड दैट इज़ टू डू विद दी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है कनाडा में, वो बड़ी एक फ्रेजाइल हुई भी है। ख़ास तौर पे इमिग्रेशन का जो मैटर है, उसके साथ साथ जो क्राइम है वो दिन ब दिन इतना बढ़ गया है। चाहे वो ऑटो थेफ्ट हो, ब्रेक इन्स हो, मर्डर्स हो रहे हैं, यहाँ पर एक्सटॉर्शन हो रहा है। देयर सो मच गोइंग ऑन राइट नाउ। उस हवाले से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, राउंड टेबल थी, जिसमें कि मिनिस्टर वीरानी एंड मिनिस्टर मार्क मिलर, दे वर बोथ अटेंडेड along with some of the liberal member of parliaments and Ruby Sohota। So our team was there, and they have covered that for quite a bit, little bit for you। They'll give you a little glimpse of that कि वहाँ पर क्या हुआ। But we're going to play that for you in a bit। But इसके साथ साथ वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन वी आर एक्सपैंडिंग, और आपने हमारा सोशल मीडिया पेज पे देखा होगा कि वी हैव कपल ऑफ positions out there for you। One is that we're looking for media sales and marketing people who would like to be part of Voice of Toronto TV। Give us a call। आप हमें Facebook पे भी मैसेज कर सकते हैं। And if you are a host, you are a broadcaster, we are looking for you। We are looking for you, and we can have programs in English, Punjabi, Hindi, all those languages। And similarly for the Voice of Toronto Television, that we are looking for the media personalities, media sales, and खास तौर पे जो marketing के लोग हैं। If you are from a university, you're looking for some hours and you would like to be a part of television, we are there for you। We are here, we can give you those hours। You can be a part of Voice of Toronto TV। We can give you a lot of help into your career as well। तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी जाएं, वहाँ पे भी आपको ये मिलेंगी इन्फॉर्मेशन। और प्रोग्राम के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना रेज्यूमे जो है voiceoftorontotv@gmail.com के ऊपर। प्रोग्राम में आगे चल के जैसे आपको पता है कि हमारे शहर टोरंटो में दिस इज़ अ वेरी हैपनिंग वीक जस्ट स्टार्टेड यस्टरडे। और टेलर स्विफ्ट दैट बड़ी बज़ थी काफ़ी 2-3-4 महीने से। She is a singer from United States and she is in Canada। She is performing now in Toronto। उनके आई थिंक 5 या 6 शोज़ हो रहे हैं यहाँ पर। उस हवाले से आई विल हैव अ फ्रेंड विद मी, गौरव श्रीवास्तव।
who's been keeping a track of Taylor Swift, वो हमसे थोड़ी सी बात करेंगे and he'll give us a little bit of the updates about Taylor Swift events as well. And आगे चल के just recently a new movie that came out, it was launched, and I had the cast with me on the show. Cricknick that came out, it got premiered. उनकी जो team है, they're going to be joining with me later on into the program as well. So all in all, it's a very soft program today. और हमारे साथ रहिए, and like I just said, if during the program you'd like to be a part of the show, pick up the phone, give us a call at 905-670-4114 is a number to call to the studio. I'm going to take you to those couple of clips that we have got for you today from the media roundtable media conference that happened. तो आप उसको watch करें, उसके बाद हम प्रोग्राम में वापस आते हैं. That you hear directly from the ministers responsible, because I can assure you our incredible team in the region of Peel works really closely with these amazing ministers to make sure our community understands that the feedback that we hear goes directly to the work that's been happening on the ground. And I just want to say thank you to our media partners for always taking that back to our community members to be able to have this wholesome discussion. So thank you. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਅਰੀਫ ਰਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗ ਸਾਨੀਆ ਸਿੱਧੂ, ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ, ਵਿੰਟਰ ਹੀਅਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. We are also very thankful that your government has done a lot. We do have about 30 minutes, so what I'm going to do is I'm going to do one question, one follow-up for every outlet. I'll just go around the room, and if we have any leftover time, we'll go from there. Okay, so. वेलकम बैक व्यूअर्स. तो ये एक क्लिप था, मैंने कहा कि मैं आपके लिए प्ले कर दूं. सो इमिग्रेशन के हवाले से मार्क मिलर, काफ़ी दिनों से उस पर बात हो रही है कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जो अपना कोटा था उसको उन्होंने काफ़ी कम किया है. सो द 500,000 quota that was there for people to come to Canada that have been reduced down over the years to 350,000 or so. That is going to create a lot of effect into the immigration processes that will happen across the world. Secondly, the important thing that also happened that कि जो student visas थे, they have been capped also. So उसकी वजह से people who are already in Canada, they are already having difficulties to get integrated into our society. और उस हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कॉलेजेस में जो आए हुए हैं, इंडिया से ख़ास तौर पे, वो डिफरेंट रैलीज कर रहे हैं. दे बिन सिटिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे बिन ट्राइंग टू बी वेरी वोकल कि जी वी केम इनटू दिस कंट्री on a student visa and now our visas will not be extended, our work permits will not be extended. So I think it's a need of time that the government needs to come up with some sort of a solution and how to address this problem, which is very, very important. And but having said that, I mean things will be changed. Minister Virani was there and he was talking about खास तौर पे जो auto theft है, he was talking about the crime and how they want to curb that. They want to bring some more swift sentences, long-term sentences to the repeat offenders जो हैं. Even Justin Trudeau, he talked about it, but I believe the provincial government also talked about it. But the reforms need to come in. Then the reforms need to come in. They need to get implemented. The judiciary has to change, and then this is how we can get better as a country to curb this violence. Because साल के 60-70 homicide यहाँ पर होते हैं टोरंटो के अंदर, which is a very alarming. And then thousands and thousands of people are affected with this. And also the other thing that is affected is the auto theft. Auto theft is a big crime right now. It's a money-making game right now, billions of dollar industry where people are, their cars getting snatched and then they get exported out to Quebec, from Quebec into the other part of the countries, into Europe and Middle East.
and that is creating a lot of problems. So I hope that with this the media briefing today, some positive elements will come out of this, and I hope that we can look for something better in the next coming days. So I have with me a good friend Gaurav Srivastava, and I did mention to you in my opening today that Taylor Swift is in Toronto. I believe yesterday was her first show, and it's such an expensive ordeal right now. It's so hard to find tickets. Tickets are going somewhere between $1,000, $2,000 to $5,000, $10,000, even more, and people are still going in. And I think Gaurav can tell us a little bit about what's going on with this and what kind of information he have with us. Hi Gaurav, good evening. कैसे हैं? Hi, good evening, Anjum sir. I'm doing good. How are you doing? Great. आई एम वेरी वेल. आप अपना कैमरा अगर चेंज कर लें, इसको हॉरिजॉन्टल कर लें, वर्टिकल से तो ज़्यादा बेहतर होगा. Okay, is this better now? नहीं, आप थोड़ा Maybe just a sec. I have आप to rotate आप that फ़ोन को thing. रोटेट कर लें. जी जी, हाँ जी, फ़ोन को रोटेट कर Just लें. a sec. हाँ जी, हाँ जी, It should फ़ोन, हाँ come. जी, दिस इज़ मच Now it's बेटर, better, मच बेटर, right? मच Yeah, बेटर. for जी जी sure. जी, Yes, थैंक यू, yes. थैंक यू. हाउ आर यू Tell me, टुडे? how are you doing today? कैसे हैं आप गौरव? बहुत बढ़िया. आज तो बारिश भी थोड़ी हो रही है और जी. थोड़ा मौसम भी थोड़ा ठंडा है. तो अब जैसे आपने बोला, I was just listening to you and such a nice presentation of the introduction of this particular episode of yours. Yeah. थैंक यू सो मच. थोड़ा सा सेंटर में आ जाइए, आप थोड़ा सा कैमरे से बाहर हैं. सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि DCS जो है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि गौरव श्रीवास्तव Right. इज़ अ वेरी हैपनिंग मैन इन आवर सिटी. ही इज़ एवरीवेयर, कोई ऐसी जगह भी बची नहीं है जहाँ पर ये नहीं है, जहाँ पर ये नहीं होते. ही इज़ इनटू पाकिस्तानी इवेंट्स, इंडियन इवेंट्स, तमिल इवेंट्स, कैनेडियन इवेंट्स, मेन स्ट्रीम इवेंट्स. I think he has made his name in the past few months, which is a good thing when you come into this country, and you need to have the recognition. And we are always here as the Voice of Toronto TV to promote people like you, Gaurav, who wish to Thank you have so some much. sort of a say that you would like to bring a change into the community, into the society by virtue of helping people in so many ways. सो थोड़ा सा पहले तो अपना तारुफ करा दीजिए हमारे व्यूअर्स को, जो आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं. सबसे पहले जितने हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली इन कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, सबको मेरा सलाम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते. जी. माय नेम इज गौरव. आई एम अ फाउंडर एंड CEO ऑफ DC Elite Indian and Multicultural Community. दिस इज अ बिग ग्रुप. इट हैज 1600 फैमिलीज हैं इसमें, और हम लोग काफी वाइब्रेंट हैं कनाडा में, स्पेशली सिटीज लाइक ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ओकविल और टोरंटो. और जैसे अंजुम सर ने बिल्कुल अभी सही बिल्कुल हमारा जो जिक्र किया, वो ये बताया कि पिछले एक साल में ये कम्युनिटी हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स. सो वी आर इन स्पोर्ट्स, वी आर इनटू पॉलिटिक्स, वी आर इनटू मीडिया, वी आर इनटू picnics, and we are into cultural events and mental health, everything. So we are into everything. So it's kind of a people's channel, you can say people's platform, where different communities from Delhi, Chandigarh, I must also mention now big time Karachi, a huge cheers for Karachi and Lahore viewers. बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो मीडिया में हैं, फैशन वर्ल्ड में हैं, बिजनेसमैन में हैं, बिजनेस वर्ल्ड में हैं, क्रिकेट में हैं. So they are there. And recently we have also opened chapters for Ukraine and Venezuela. So हम लोग कुछ ना कुछ वाइब्रेंट कम्युनिटी के लिए लेके आते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे 5 या 6 महीने सर्दी के पड़ते हैं तो लोग थोड़ा लोनलीनेस में जाते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में जाते हैं. तो सब लोगों को हमेशा एंटरटेन करना, टू कीप देम गोइंग, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So that is the whole purpose of DC Elite Indian and Multicultural Community. Charan ji, good luck to you with that. And I know you are, expanding, and like I just said, you are actually everywhere in the city. Most of the stuff that you do. The one thing I always appreciate people in my life when they are in this country and they have some sort of a platform. And they extend that platform to the people, either the newcomers or existing people in this country, and make something work for them. Sometimes that 2 to 4 connection you need to move ahead in life. And if you provide those connections, to people, and they can get somewhere. किसी की अगर घर की दाल रोटी चलती है आपकी,
इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से, और you make things, bring a change into their life, into the perspective, the way they think, the way they do the things, and it's a great effort. Thank you so much for doing it. थोड़ा सा No worries. Thank हमारे you so much. हमारे शहर के अंदर एक बड़ा वाइब्रेंट एक आर्टिस्ट आया हुआ है, टेलर स्विफ्ट, कनाडा बिल्कुल में, बिल्कुल फ्रॉम यूएस। काफ़ी महीनों से इसकी देयर वाज अ lot of strides in the city about it. So now she is finally here, she is performing. इसके हवाले से you've been covering it, so थोड़ा सा बताइएगा हमारे viewers को कि what people need to know. ऑफ कोर्स टेलर स्विफ्ट को तो खैर कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं. शी इज अ ग्लोबल आइकन जी एंड हर नेम इज लार्जर देन लाइफ, स्पेशली जो उनके फैंस यूनाइटेड स्टेट्स में हैं. और इट्स सो थैंकफुल टू हर दैट शी हैज ब्रॉट हर एरास टूर टू कनाडा. और ये 6 शोज होंगे, काफी वाइब्रेंट शोज होंगे जो रॉजर्स सेंटर में टोरंटो में हैं. इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू दैट 2 बार तो मैंने आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो का ट्वीट देखा है व्हेन ही इनवाइटेड हर. And today was another tweet at 6 p.m. when he said, I hope all the things would be done in the best of the ways. जी So जी Taylor Swift is a musical sensation. She's a global icon. कई जगह पे तो ये भी बोला जाता है कि कई देशों की ये इकोनॉमी भी बदल देते हैं, बिकॉज इतना रेवेन्यू आता है इनके म्यूजिक से, इतना टूरिस्ट आते हैं, इतना मर्चेंडाइज होता है कि लाइक राइट दे आर वेरी वेरी फेमस अराउंड द वर्ल्ड. सो 6 शोज होंगे जिसमें people from teenage to mid age and even elderly, they are all coming up to this show. और आज का जो शो स्टार्ट हुआ है, today is the first day of Taylor Swift show in Toronto, और ये 7 बजे स्टार्ट हुआ है. आई थिंक ये 9:30 या 10 बजे तक तो फॉर श्योर इट विल बी गोइंग ऑन इन टोरंटो. तो आज तो टोरंटो में एक तरीके की दिवाली या ईद मैं बोल सकता हूँ. आज करेक्ट ये चीज यहाँ पे मनाई जा रही है, और ये चीज अगले 10 साल तक चलेगी, अगले 10 दिन तक ये बैक टू बैक इवेंट्स हैं जिसमें 6 बहुत बड़े शोज हो रहे हैं यहाँ पे. मैं शॉक था when I saw that $20,000 for the ticket. यस, I was shocked. ऑफ कोर्स. सो ये टिकटें स्टार्ट तो हुई थी अराउंड $500 to $1,000 से, बट यू नो डिमांड एंड सप्लाई. और जब नाम टेलर स्विफ्ट का आ जाए तो अगर चाहे वो यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हों, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन के बीच में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हों जिसमें टेलर स्विफ्ट काफी इन्फ्लुएंस करती हैं इलेक्शंस को, जो इन्होंने किया भी इस बारी. और उसी तरह से जो प्राइसेस हैं, जब नाम टेलर स्विफ्ट का आता है तो लोग अपने वॉलेट्स की तरफ नहीं देखते हैं, वो वैल्यू की तरफ देखते हैं. बिकॉज टेलर स्विफ्ट के साथ एक सेल्फी लेना या सिर्फ स्टेडियम के अंदर उनको लाइव परफॉर्म करते ही देखना, ये लोगों के लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. I believe आप so. बिल्कुल यकीन करेंगे कि एक टाइम था 1980s और 90s में व्हेन पीपल फ्रॉम एशिया, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, हम लोग बहुत वाइब्रेंट और बहुत इंटरेस्टेड होते थे माइकल जैक्सन को देखने के लिए, Right. राइट, मैडोना को देखने के लिए. तो वो हमारे जमाने के वो ग्लोबल आइकन्स हैं. बिल्कुल बट आज का जो जमाना है, जो टाइम है, वो ऑब्वियसली टेलर स्विफ्ट का है. चलें गौरव, आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर दी अपडेट्स, आई रियली अप्रिशिएट इट. और कुछ जाने से पहले कहना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी को जो आपको आज सुन रहे हैं और देख रहे हैं? मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे जो मौके आते हैं, जब ग्लोबल आइकन्स या सेंसेशन आते हैं, कनाडा से आए, चाहे वो पाकिस्तान से काफी लोग आते हैं जहां पे हमारे आजकल बैक टू बैक कवालीज हो रही हैं, जी इंडिया से बहुत सारे सुपरस्टार्स आ रहे हैं, बॉलीवुड से. आप इन्हें जरूर देखें, इनकी टिकट्स लें, बिकॉज ये एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल भी है. इट ऑल्सो ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जहां पे आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, एंड यू कैन सी दीज लवली आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मिंग. बाकी तो लाइफ में, डे टू डे लाइफ में सब अपना बिजी तो रहते ही हैं, बट जब कुछ ऐसी पर्सनैलिटी आए तो वी शुड डेफिनेटली गो विद आवर फैमिलीज एंड एंजॉय. So this is the global message of happiness, peace and brotherhood from DC elite Indian and multicultural community, और स्पेशली हमारे जो चैप्टर्स हैं पाकिस्तान में, लाहौर, कराची, वेनेजुला और यूक्रेन, उनके लिए. आपने टिकट लिया टेलर स्विफ्ट का? आप जा रहे हैं किसी उसके इवेंट पे? मेरे को ये हो सकता है कि अभी भी 9 दिन और हैं, कल के बाद आई कैन डेफिनेटली गो. तो मैं यही देख रहा था कि जिस आर्टिस्ट को 58 टाइम्स शी हैज बीन नॉमिनेटेड इन ग्रैमीज, 14 ग्रैमीज जीते हैं, और 4 एल्बम्स बैक टू बैक ग्रैमी ऑफ द ईयर रही हो, Right. तो उसको देखना जरूर बनता है. मैं डेफिनेटली आई विल एक्सप्लोर माय एवेन्यूज एंड वेज एंड मींस सो दैट आई कैन स्नीक have one ticket, and I can definitely meet her in Rogers Center.
बट ये बहुत बड़ा ड्रीम कम ट्रू होगा अगर आप टेलर स्विफ्ट से मिल पाते हैं टोरंटो में। All the best, मेरे भाई, all the best. Thank you so much. थैंक यू सो मच अंजुम सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और इसी तरह आप खुशियां लाते रहिए सारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव, डिलीट इंडियन कम्युनिटी से हैं, डिलाइट कम्युनिटी एलीट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनको आप फॉलो कर सकते हैं, DCS इनका पेज है। हम एक 2-3 मिनट के ब्रेक पे जा रहे हैं, कमर्शियल बहुत ज़रूरी हैं, एंड विल कम बैक। बट ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर आप हमसे बात करना चाहें व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, हमारे स्टूडियोज़ के लाइन का नंबर है 9056704114। You are watching Voice of Toronto Television with me, Anjum Malik, and we'll come back in just a few minutes. Thank you so much. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ETN Travels ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ, ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस, cruises, super visa insurance, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN Travels ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution. 2 locations to serve you, Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. Welcome to I Will Get You Mortgage Services Limited. This is Nasir Ahmed, your principal broker for Alberta, Ontario and British Columbia. Welcome to our new office located at the heart of Markham Road and 401, 2100 Ellesmere Road, unit number 320. Whether it's a residential mortgage for your dream home, it's a commercial mortgage for your business, it's equipment financing, or you're looking for a reverse mortgage because you're senior, we have solutions. At I Will Get You Mortgage Services Limited, we believe in diversification. That is why we have agents who speak your language. Are you looking to start a new career as a mortgage agent? We are here for you. We will provide you in-house underwriting as well as in-house fulfillment officers that will support you and help you step by step for your mortgage needs. Remember, for all your mortgage needs, easy or difficult, we have solutions. Give us a call, iwillgetyouMortgage.com. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labour, poverty and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve Canada. So it's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different colors. If you would like to see how it works, just see over here. You have to pull it down. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. However, when your mood changes, what you can do, just pull it down. It gives you 100% privacy, and it will control also ultraviolet rays control. You want to see out, what is a sea view, just pull it again. This is our very newest product. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Thank you very much to visit Pan Am Blinds. Well, looks like you got some great stuff for your new home. Yes, that makes me happy. Happy? Then why aren't you smiling? I am smiling. After the massive success of Ghazal Night in Durham Summerfest 2024, BMK brings you another soulful Ghazal Night featuring Muazzam Ali Khan, tribute to legend Jagjit Singh. एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर. An evening of unforgettable ghazals. नैनों पे हम दिल हारे हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए. Witness this amazing live concert on Saturday, December 7th at 1370 Williams Parkway East, Brampton, Ontario L6S1V3. Tickets are only $30 and available in limited quantity. Get your tickets now on eventbrite.ca. For more info or sponsorship, call 416-897-1683. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ETN Travels ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ. ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ, ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस, cruises, super visa insurance, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN Travels ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution. 2 locations to serve you, Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के लाइव ब्रॉडकास्ट. मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक. और ब्रेक में जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि एक पिछले दिनों में एक प्रीमियर हुआ था मूवी का, क्रिक निक का. उसकी जो कास्ट है, उसकी जो टीम है, दे विल बी जॉइनिंग अस टुडे टू गिव अस लिटिल बिट ऑफ ओवरव्यू हाउ एवरीथिंग वेंट. सो आई हैव विद मी, आई बिलीव आई हैव निक विद मी राइट नाउ. हाय निक.
अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है निक? हाउ आर यू? हाँ जी ठीक जा रहा है सब कुछ, अमेजिंग जा रहा है। कैनेडियन चॉइस अवार्ड्स का नॉमिनी बना हूं मैं। मैं नहीं, मेरा कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी। सो रियली रियली ग्रेट न्यूज़ फॉर मी एंड द होल टीम। Okay, So yeah, it's validating our work. that's good to know. That's good to know that Yeah, you are making some strides in the community. So, yeah. how did the premiere go? I was not able to join you, but how did everything go for you? हाँ जी, the premiere was extremely well received. And yeah, people gave us amazing reactions. We had one premiere night, so people were ecstatic to watch the film and the professionalism shown by all the actors and the whole team. Everybody's hard work was showing, and it was glistening out there. So yeah, it was amazing. The premiere was amazing. But I'm planning, I have submitted to 11 film festivals till now. 5 Okay, of them Oscar qualifying, BAFTA qualifying, and CSA qualifying, and 7 local film festivals. One okay, of them being Filmy, that is going to happen in 6th of December, I think, 6th or okay, 7th of December. okay. And there's a few other film festivals as well. Niagara International Film Festival is another one. Pickering International Film Festival is another one. So looking forward to the reception and being in a room full of people enjoying the movie, hooting for the movie, and enjoying the ride. Yeah. So let me ask you, Nick. We did talk about this. This was to do with the, a father who was abusive father, and Mhm. in the movie, the Nick has been Mhm. played by another one of your artists. Mhm. How in generally after the movie, what Mhm. sort of reviews did you get? That what people said about the movie itself, the content, the substance, and what did they drive out of this movie? Some of the people actually could relate to the movie, where they could relate to their actual own lives. They could relate to what is happening with them in their own lives. Mm-hmm. Some of them have been through abuse. Abuse is a very uh, big problem all over the world. Mm. Thankfully, we live in Canada, where it's a little bit more difficult to be done, but still we hear of so many honor killings and all that stuff happening, not only in simple life, but in everybody's lives. No, but So alcohol and drugs are Manji, very big in are Canada. very big in Canada, extremely big in Canada. And we recently heard that $500 million of bust happening on the news. Yeah. So it's a very big problem in Canada, and a lot of people were relating to the issue. A lot of people related to the core of the idea, Acha. which is the gist of the idea, which is in Canada, divorceism is a very big thing. Mm. There is close to 52% of people who are divorced. Unfortunately, Yeah. I mean, some of them have made a personal choice, and some of them Yeah. have, unfortunately had that come Well, we upon have them. we have one of your artists with us, Yeah, the Sultan Bhai. yeah, that's Ali Bhai. Yeah, जी that's Ali Bhai. Assalamu alaikum Ali. क्या Sultan हाल है? Ali. सलामकुम मंजू भाई कैसे हैं आप Alhamdulillah. How are you? I'm good thank you for asking So thank you for joining me again on this evening, a rainy evening actually. But having said that, Taylor Swift is in town. Today is our first show. We just had another guy who was yeah just talking about that. So Yeah. tell me a little bit about. she's the talk of the town जी जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है ऐसे ही है. तो आप मुझे बताएं कि प्रीमियर के बाद हैव यू बिकम अ सेलिब्रिटी नाउ? ने प्रीमियर के बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बहुत से लोगों को हाँ. पसंद आया बहुत अच्छा फीडबैक मिला मेरा ये एक फर्स्ट
जो था वो फर्स्ट एवर शॉर्ट इंडिपेंडेंट मूवी थी, फर्स्ट ब्रेक था जो. थैंक यू Yeah. टू निक भाई फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि आई केम फ्रॉम एथलेटिक बैकग्राउंड और मेरा कोई इतना ज़्यादा एक्टिंग में इतना था नहीं, लेकिन मैं थिएटर एक्टिंग करता रहा ड्यू टू प्रोफेशनल रेसलिंग. मैं 10 साल प्रोफेशनल रेसलिंग करता रहा एंड एक्टिंग वाज इन्वॉल्व इन इट. इट वाज अ मेजर पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट. उसकी वजह से बहुत सा थोड़ा इजी भी हुआ. निक भाई ने भी सेट के ऊपर बहुत रिलैक्स रखा और कॉन्फिडेंस देते रहे. And I kept asking him, am I doing all right? Am I doing okay? Because the way I used to do back in the days, it was more live audience, and you react on you act on the reaction, right? Spontaneous reactions. Respond to exactly. But in the movie set is all quiet, Correct. and you have to feel the feeling and let it out. Exactly. तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. उसके बाद मुझे कुछ एजेंट्स मिले जो दे लुकिंग आफ्टर फॉर मोर वर्क्स फॉर मी. काफ़ी अपॉर्चुनिटीज. इट्स हेडिंग इन अ राइट डायरेक्शन. आपको पता है इस काम, इस फील्ड के अंदर इज जस्ट बी पेशेंस. एंड निक भाई is mostly keeping up to date with the project. माशाल्लाह से बहुत से फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर सबमिट हुआ है. अभी प्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट कैनेडियन चॉइस अवार्ड के लिए सेलेक्ट नॉमिनेट भी हुई है. सो आई कैन सी द ब्राइट स्टफ कमिंग, ग्रेट स्टफ कमिंग. Good. तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा. Inshallah. Nick, what is your next project? What are you working on? I'm working on 3 different projects, Anjum bhai. I'm working on 3 different projects like Cricknick 2.0. I have picked Cricknick 2.0. Yeah, that's what Cricknick 2.0. Okay. हाँ जी, Cricknick 2.0. फिर है Shabo, which is a film about homelessness and what you can do about it. That's a very good content. That is excellent content as well. Cricknick से थोड़ा कम, but वही level पे होगा. लेकिन वो है. And then I have a couple of projects on the back burner right now. A project called Angel, where we see on TV all this backbiting and backstabbing and all that stuff. Angel takes a complete different turn from that. It's where when you help each other build a socially responsible business. So that's another one in the works right now in the back burner. But I'm working on Inner Storm, which is another series. जैसे आपको मिला था तो बता रहा था कि cancer based project है. Cricknick and then Shabo. These are the 3 projects I'm doing. Let me ask you this. When you put in all this hard work, create content, create a team, and do all the shoot and everything. Yeah. By virtue of this Cricknick, when it came out after that, do you think that in Toronto, do we have the capacity that people come forward and say, you know what, this is a great project, we are here to support you financially, to fund you. Do you find any roadblocks or shortcomings? There are roadblocks. I will be honest here. There are roadblocks, even for the best of the best filmmakers. Like I was recently following Gadar 2, and it made 600 crores, but they were unwilling to support the film. Sunny Deol's pivotal role. So it was not being supported by funds and stuff like that. So there are roadblocks, but slowly, because of this project and the connections that I've gained through the project, and coming online with you and talking on your show on Voice of Toronto TV as well, I'm gaining traction. It's gaining traction. It's gaining momentum, which I really appreciate. And slowly the ball is moving in the right direction. I can see that now. I can see the end at the light at the end of the tunnel. वो दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है. अब उसको खोलना है, बस धीरे-धीरे बड़ा करना है उसको. नहीं, because मेरा एक क्वेश्चन इसलिए था कि people like you who are young
energetic, have the drive. Mm-hmm. Now, if everything is there, but you don't have the funds, you don't have the people Mm-hmm. to support the projects, Mm-hmm. or the governments to come forward, or Mm-hmm. the film fraternity people come forward, then Mm-hmm. you always have this, notion of disappointment. So that's what the reason I've asked that what has been the outcome so far. The outcome has been I was accepted to Web Series Canada, which is a mentorship program for 6 weeks. Okay. They train us in different aspects of filmmaking. And just before this interview as well, I had to cut that class short because I had this interview to come on to. So that has happened. And then Bell TV is looking at the projects really seriously now. That has happened. On the federal provincial government, I've applied to Ontario Arts Council, and on the municipal level, Toronto Arts Council. That has happened. And then I'm just waiting, I'm just holding for Canadian Arts Council. So the support is there. It's are you ready for it is the question. Yeah. Are you ready? I mean, the support is there. Like all these years, had I had that support, maybe I wouldn't have been able to execute the project at this level. Because I did not have that support, it taught me creative ways of filmmaking, where I cut the budgets and kept the budgets low. I made some films at zero budget as well, and all that stuff. So it helped me with that. And then Ali Bhai is here. He can answer some of that as well. But it helps you. It shapes you. So yeah, that's what I We are wanted to missing share. your other artist, Zavri. Where's Where is she? Xavier, yeah. He is in India, so I guess he's Oh, trying to okay. join right now. Oh, I Yeah, see. yeah, I see. yeah. Okay. J. Ali, what would you like to say before we wrap up the show? Whatever Nick Bai said, he's absolutely right. I've been in this entertainment world for the last 10, 15 years myself, especially as a professional. Everything takes time. There's a lot of obstacles. There's a lot of, like people always ask for more credentials. Yeah. And what's your resume, the backgrounds. And that's what we're building right now with our team, especially with Nick Bai. You got a lot of great projects in the pipeline. And also he's mentoring me, he's getting also mentor, and there's a lot of good things are happening. There's a few opportunities that are like knocking the doors, but we want to be prepared, just like Nick Bai says. Are we ready? Because things can knock the door, but we got to be ready for what we have for as a product to provide out there. So that's something that in the work right now. छोटे मोटे रुकावट तो आते रहेंगे, जी, जी. मतलब कि देर इज जब भी आप कोई बड़ी सोच रखते हैं, जब बड़ा कोई फैसला करना चाहते हैं, जब बड़ा आपका एम है, तो there will be obstacles that you have to come across and you 100%. have to face it. But inshallah we will मतलब कि देर है अंधेर नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बिल्कुल ठीक. इंशाल्लाह जरूर होगा. Yeah, just have that positive attitude towards things in life, and envision, on a larger size, so things will happen, inshallah. Inshallah. Both of you, thank you so much for joining us tonight on this Thank you live so much. transmission. Anjum bhai, And, before we go, I just wanted to thank a few people on your show. I wanted to thank Gerard from Markham Cricket Academy. I wanted to thank Wasim Bhai from Black Ash Sports. I wanted to thank Ryan Singh and my whole team, including Ali Bhai here. This project wouldn't have been possible without each one of their supports, and I really appreciate them. And I appreciate you too, Anjum Bhai, for being such a great support and such a great sport, that as soon as I sent you a message about it, you said, okay, let's go online. So sure, I appreciate that anytime. support. My doors are always open for people like you, my friend. Not a problem. Thank you, Thank you Anjum so Bhai. much. Much You guys stay blessed. Take care. Yeah. Thank you very much. Viewers, ये थे हमारे साथ क्रिक निक की टीम, और
इस तरह के जो लोग हैं जो कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके आते हैं और दे ब्रिंग इनटू द कम्युनिटी एंड हिट दोज द नर्व्स ऑफ द कम्युनिटी जो प्रॉब्लम्स हैं. So that is where we are here to support all these kind of projects. And अगर आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ब्रॉडकास्टिंग में हैं और आप चाहते हैं कि you like to come and do a show with us on Voice of Toronto TV, you want to be a field host or you want to be a host of a show, please write to us voiceoftorontotv@gmail.com. That is our email. And even for the feedback, this is our email. Our social media handle is Voice of Toronto TV. I'll come back to you with another program. जब तक अपना ख्याल रखें. A very good evening and very good night, and thank you for watching Voice of Toronto Television. Allah Hafiz.